अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू इकोलॉजी बाय शोर। इस वीडियो से हम लोग अपनी सीरीज़ को कंटिन्यू करेंगे। यहाँ पर BT101 इकोलॉजी बायोडाइवर्सिटी एवोल्यूशन 1 के लेक्चर स्टार्ट करेंगे। हमने कर लिए हैं इसके तकरीबन 64 लेक्चर्स। मैं लॉगिन कर लेती फिर आगे चलते हैं। सो फ्रेंड्स, हम लोग चलते हैं आगे। यहाँ पर आ जाते हैं। तो हमने 63 टॉपिक्स किए हुए हैं। ऐसा करते हैं कि हम 4 में से चेक कर लेते हैं कि हमने कितने किए हैं। ठीक है, तो चेक करते हैं हम लोग। ये देखिए, आप लोग 63 तक मैक्सिमम है और इसको लेते हैं क्रॉस। और अब चलते हैं अपना डिफॉल्ट की तरफ, जिसका नाम है ग्रीन हाउस इफेक्ट। और अब अपना क्विज ले लेते हैं। सेम काम आप लोगों ने करना है मतलब के क्विज के लिए। ठीक है, मतलब क्विज कह रही हूँ मैं असेसमेंट के लिए। आप लोगों ने यहाँ से क्वेश्चन लिख लेने अपने पास। ठीक है, चल आप लोग अपना स्टिकी नोट्स निकाल लें। मैं भी निकाल रही हूँ, पेंसिल भी निकाल लें और हम साथ में लिख लेंगे इसके। एक्चुअली इसका हमने पहले भी लिखा हुआ है, तो वही निकाल रही हूँ मैं, उसी पर लिखूँगी। मुझे मेरे पास इसका बहुत कम स्पेस है। आप लोगों के पास भी होगी आई होप थोड़ी बहुत स्पेस, तो उसको यूज़ करें। ठीक है, उसके ऊपर ना MCQ लिखे मतलब मतलब। ठीक है, ताकि बाद में आप लोग क्विज़ के लिए प्रॉब्लम ना हो। सही है, तो अभी इन सब चीज़ों को ना आप लोग अपनी किसी ऐसी चीज़ में रखिए सामने जो आप रोज़ यूज़ करते हैं। लेकिन ऐसे कि मैंने पर्स में रखा हुआ, और आप जो चीज़ रोज़ाना यूज़ करते हैं उसमें रख लें। ठीक है, अपने पास, ताकि आप कहीं बाहर जाएँ तो इसको पढ़ सकें। सही है, बहुत फ़ायदा होगा इससे। ठीक है, तो चलते हैं फिर आगे। कुछ ले लेते हैं। हीट इज रेडिएटेड इनटू स्पेस इन द फॉर्म ऑफ इंफ्रारेड। ये वाला तो हमने किया हुआ है, ये
लिखा हुआ है, ठीक है। उसका विच इज़ द बैलेंस्ड इक्वेशन फॉर फोटोसिंथेसिस, ये भी हमने किया हुआ है। देखो ये वाला हमने BT101 में किया था, ठीक है। और इसमें भी आ रहा है, मैच करते हैं ना सब। वैसे ये हमने MCQ लिखा हुआ है, डैश इज अ डायनामिक एंटिटी इकोसिस्टम, ठीक है जनाब। ओके, ये सारा कुछ तो हमने लिखा हुआ है। आगे चलते हैं हम लोग, आगे चलते हैं हम लोग, ठीक है। ओके, सो वीडियो को सुन लेते हैं। एक और जो मेजर नेगेटिव इम्पैक्ट है पोल्यूशन का, दैट इज ग्रीन हाउस। और जो मेजर नेगेटिव इम्पैक्ट है पोल्यूशन का, दैट इज ग्रीन हाउस इफेक्ट। एंड द ग्रीन हाउस इफेक्ट और विच इज द मेजर रीजन ऑफ ग्लोबल वार्मिंग, दे आर बिकमिंग ग्लोबल इशू दीज डेज। और इसकी लोगों के लेवल के ऊपर, गवर्नमेंट्स के लेवल के ऊपर अवेयरनेस इज बीइंग इनहेंस्ड। सो द ग्रीन हाउस इफेक्ट के बारे में वी नो कि कोई भी हमारे पास जो मेजर सोर्स है लाइट का, दैट इज सन। सोलर लाइट व्हेन इट रीच द एयर, इसका मेजर एक पार्ट जो है वो उसको हम डाइवर्ट बैक कर देती है हमारी एटमॉस्फेयर की लेयर्स। सो बट उसका फिर भी एक पार्ट जो है इट विल बी एबल टू रीच द सरफेस ऑफ द अर्थ। सो वन आवर ग्राउंड इज हीटेड बाय दैट हीट and the visible light which is coming from the sun and the infrared lights, it would add addition in temperature of our soil. So once it is heated, this surface will reflect that infrared light back. And this re-emission mostly it would be released in the space. लेकिन उसका कुछ ऐसा पोर्शन है जो कि दोबारा से re-emit कर दिया जाता है by 3 different types and 4 types of the gases and vapors. उसमें कार्बन डाइऑक्साइड है, मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड and water vapors which are present in that atmosphere. ये उस इंफ्रारेड को जो फिर रेडिएट बैक हो रही होती है उसको दोबारा से emit करके हमारी एटमॉस्फेयर में और अर्थ की सरफेस की तरफ वापस भेज देते हैं। लेकिन मोस्टली दूसरी गैसेज जो कि ज़्यादा प्रोपोर्शन में है, फॉर एग्जाम्पल नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन, these are the major gases component in our atmosphere. They don't act as this greenhouse gases. So ये एक re-emission of infrared light back towards the surface of Earth. This phenomenon is called as greenhouse effect, and we study it with the help of this. So in this image, we can see that visible light is passing through the atmosphere, and it is being absorbed by the surface of our planet. But उसका एक पार्ट जो है it is being radiated back, और ये दोबारा से स्पेस तक पहुंच जाता है। लेकिन वो गैसेज जिनको कि हमने ग्रीन हाउस गैसेज का नाम दिया, कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, वाटर वेपर्स एंड नाइट्रस ऑक्साइड, उनके मॉलिक्यूल्स इस इंफ्रारेड लाइट को दोबारा से वापस भेज देते हैं। एंड दिस री-एमिशन इट विल हीट अप आवर दिस लोअर एटमॉस्फेयर एंड द surface of Earth. So these greenhouse gases which are present in very small amount, they are doing this greenhouse effect naturally. लेकिन ह्यूमन एक्टिविटीज जो कि इन गैसेस को आर्टिफिशियली एडअप कर रही हैं हमारी एटमॉस्फेयर के अंदर, दे आर इनहेंसिंग एंड इंक्रीजिंग द टेम्परेचर ऑफ आवर एटमॉस्फेयर. सो विद द हेल्प ऑफ दिस वीडियो वी विल बी एबल टू अंडरस्टैंड दैट हाउ दिस ग्रीन हाउस इफेक्ट इज बीइंग कॉज्ड एंड व्हाट आर इट्स इम्पैक्ट्स. Gases in the atmosphere, such as water vapor, carbon dioxide, methane, nitrous oxide, and chlorofluorocarbons, let the sun's light in, but keep some of the heat from escaping, like the glass walls of the greenhouse. The more greenhouse gases in the atmosphere, the more heat gets trapped, strengthening the greenhouse effect and increasing the Earth's temperature. Human activities, like the burning of fossil fuels, have increased the amount of CO2 in the atmosphere by more than a third since the Industrial Revolution. The rapid increase in greenhouse gases in the atmosphere has warmed the planet at an alarming rate. While Earth's climate has fluctuated in the past, atmospheric carbon dioxide hasn't reached today's levels in hundreds of thousands of years. So greenhouse effect is increasing the temperature of our atmosphere, या हमारे planet जो है उसका temperature increase कर रहा है with the passage of the time. And the reason is because we are adding these greenhouse gases through our industries, through the other sources other than industries, जिसमें कि हमारी power generation है, fossil fuel की burning is playing a very important role. So these emitted gases, they are trapping that heat which will be released in space otherwise. So emission of these gases, we will study these gases one by one. First is carbon dioxide. 40% सोर्सेज जो है जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड को हम एडअप करें हमारे एटमॉस्फेयर के अंदर, इज कमिंग फ्रॉम द बर्निंग ऑफ द फॉसिल फ्यूल्स, बिकॉज वी आर यूजिंग फॉसिल फ्यूल ब्लाइंडली ऑल ओवर द वर्ल्ड. हमारी मोटर व्हीकल्स, ट्रांसपोर्टेशन के अंदर, हमारी फैक्ट्रीज, हमारी वाटर पावर जनरेशन प्लांट्स, दे आर ब्लाइंडली कंज्यूमिंग दिस फॉसिल फ्यूल, और उसका स्मोक इट इज एडिंग अप अ ह्यूज अमाउंट ऑफ ऑलमोस्ट 40% अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन आवर एटमॉस्फेयर. 20 से लेकर 13% कार्बन डाइऑक्साइड emission that is coming from the burning of gasoline in combustion engines of cars and trucks. So these are two major sources which are adding up carbon dioxide in our atmosphere. Aviation activities are also adding 3.5% so far, लेकिन expect किया जा रहा है कि 2050 तक ये 3.5 से 15% तक increase हो जाएगा. So all these aeroplanes, aircrafts and space shuttles, they are adding carbon dioxide because they are consuming fossil fuel.
Building structures are also adding carbon dioxide. Almost like 12% of carbon dioxide emission is done by the building of different structures. Because again, these building of structures, they are utilizing different machines, and machines are run by fossil fuel. 25% of carbon emission, that is done by burning and cutting of 34 million acre of trees each year. So this is really a horrible figure, because we are doing deforestation very rapidly. और 34 million acre अगर forest remove हो जाते हैं हर साल, so we can imagine कि ये deforestation और इससे कितने negative impact इस environment के ऊपर जो है वो produce होगा. और because we are cutting these trees, हम इन trees को जो major purpose है वो इसकी burning है as a fuel. So ultimately that process of combustion, it would add up 25% of carbon in our atmosphere. Water vapors, they almost causing 70% greenhouse effect is caused by the water vapors. So they are much more stronger in producing the greenhouse effect as compared to carbon dioxide. Methane एक दूसरी important gas है which is producing the greenhouse effect. So the methane is 20 times more effective as compared to carbon dioxide. इसका मतलब ये है कि वो heat और infrared rays जो हमारी अर्थ से रिफ्लेक्ट होकर वापस जा रही हैं, तो 20 times more effectively methane will stop them and send them back towards the earth's surface. Last 100 years में it has been observed कि methane की production because of the human activity, it has been increased 145%, which is a very important figure to be noticed by different agencies and the governments, and must be controlled. So the sources which are producing the methane, these are mostly the agriculture purposes, as rice paddies, they are adding up methane, and the bovine flatulence and bacteria in bogs which are doing the natural decomposition, they are adding methane in that anaerobic environment, and the fossil fuel is the major source of adding methane in our atmosphere. इसके अलावा flooded fields जहाँ पे decomposition का process जो है वो continue रहता है in anaerobic conditions, it is adding up methane in our atmosphere, and it is adding up methane in soil deposits as well. So the last greenhouse gas is nitrous oxide, and this nitrous oxide is naturally produced in our oceans and the rainforest. लेकिन human activities जो हैं, they are adding up more nitrous oxide in our environment. For example, nylon nitric acid की production जब की जा रही होती है in factories, so they are adding this nitrous oxide as a waste material in our air. Other is the uses of fertilizer in agriculture, and those cars which are using catalytic converters, they are also adding methane. And the last one is the burning of the wood, or the burning of the fuel is adding nitrous oxide in our environment. So these are the four components: carbon dioxide, methane, water vapors, and nitrous oxide, which are considered as the greenhouse gases. And human activities are magnifying their volume by proportion in our atmosphere, which will result in global warming. surface emits infrared radiation. The majority of atmosphere gases N2 and O2 are poor greenhouse gases in contrast to carbon dioxide, methane, nitrous oxide and water vapors. The small amount of greenhouse gases trap the infrared radiations, thus increasing the temperature of atmosphere. Major proportion of carbon dioxide, 40%, comes from burning of fossil fuels for the purpose of electricity generation. Traffic and transport vehicles produce 20% and 13% of carbon dioxide respectively. About 12% of the carbon dioxide emission are a result of building structures. Aviation 3.5% also contribute to carbon emission. Deforestation and burning all are
production. Bacteria generate methane in anaerobic conditions as they decompose organic matter. Nitrous oxide is naturally produced by oceans and rainforest, while the man-made sources are nylon and nitric acid production. The use of fertilizer in agriculture car with catalytic converters and burning of organic matter. In this lesson, the student will learn about greenhouse effect and greenhouse gases. ठीक है? Okay. और यहाँ PPT is greenhouse effect. The ground is heated by visible and some infrared light from the sun. The heated surface emits infrared light. The majority of Earth's atmosphere N2 and O2 are not good greenhouse gas. Carbon dioxide, methane, nitrous oxide and water vapors act as greenhouse gases. ठीक है, फिर उसके बाद है greenhouse effect. The small amount of greenhouse gases H2O, CO2, methane traps, absorb and emit the infrared radiation, increasing the temperature of the atmosphere. सही है. उसके बाद हमारे पास आ गया emission of gases. Carbon dioxide, 40% of carbon dioxide emission stems from the burning of fossil fuels for the purpose of electricity generation. 20% and 13% of carbon dioxide emission come from the burning of gasoline in internal combustion engines of cars and trucks. ठीक है. उसके बाद कार्बन डाइऑक्साइड की emission ही है यहाँ पर. Aviation causes 3.5% of global warming and the figure could rise to 15% by 2050. Building structure account for about 12% of carbon dioxide emissions. ठीक है. उसके बाद emission of gases, carbon dioxide 25% carbon emissions by the burning and cutting of about 34 million acres of trees each year. ठीक है. उसके बाद water vapors causes about 36 to 70% of the greenhouse effect on earth, not including clouds. सही. उसके बाद methane is more than 20 times as effective as carbon dioxide at trapping heat in the atmosphere. 145% decrease in the last 100 years from sources from sources such as rice paddies, bovine
steady fields, anaerobic conditions develop, and the organic matter in the soil decomposes. उसके बाद nitrous oxide N2O naturally produced by oceans and rainforest. Man-made sources, nylon and nitric acid production, the use of fertilizers in agriculture, cars with the catalytic converters, and the burning of organic matter. सही हो गया यहाँ तक। सो अब हम चलते हैं इस टॉपिक के लास्ट स्टेप की तरफ, जो कि हमारी पोस्ट असेसमेंट होती है। ठीक है, हमने प्री असेसमेंट को, हाँ इसके तो सारे इसलिए नहीं लिखा था ना कोई, क्योंकि इसके पहले हमने दूसरे सब्जेक्ट में लिखा हुआ ये वाले MCQ सेम है। ओके, तो यहाँ पर हम ये पोस्ट असेसमेंट कर लेते हैं। 10% एयर पोल्यूशन इज कॉज्ड बाय ट्रांसपोर्टेशन। ट्रांसपोर्टेशन गैस 20% देखते हैं। विच इज ट्रू अबाउट स्ट्रेटोस्फेरिक ओजोन। मैन मेड पोल्यूटेंट इन लोअर एटमॉस्फेयर नेवर स्क्रीन UV rays. Component of photochemical smoke damaged by CFCs, which is true about dash are strongly affected by light pollution. Fishes, reptiles, or amphibians, amphibians, क्योंकि एम्फीबियन में वाह वो दोनों गलत, ये परसेंटेज वाला और कोई बात नहीं, सही हुआ है। व्हाट इज ट्रू अबाउट स्ट्रेटोस्फेरिक ओजोन के CFC जो है वो इसको हार्म करते हैं। ठीक है, ये लिख रहे थे हम लोग। again वही आ गया, पिछले 21